Hello guys, good morning. This is Mayur Raj here, and now I am going to get discuss about the potentiometer. Okay, so potentiometer. So we can say that it is an electronic instrument uh, which used for the measuring of accuracy of potential और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज की जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है. सो वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन measure the accurate value of potential difference. You can measure the accurate value of potential difference or voltage. This is the potentiometer and its principle is we can say that potential difference between 2 points like A and B, these are the 2 points. Okay, so in here potential difference VA minus VB, that is equals to V. So this potential difference is directly proportional to the length of this wire of equal cross sectional areas. ओके, तो ये क्या है इसका प्रिंसिपल. पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लेट किया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और V इक्वल्स टू KL where K is potential gradient, V equals to K equals to V by L and this is known as potential gradient. So basically this is the main principle for the potentiometer. The potential difference between any 2 points in which steady current is flowing and the cross sectional area is equal at every point is directly proportional to the length of this wire. So V proportional to L. आप इतना ध्यान रखिए जनरली कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर का उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. V proportional L. So V equals to KL. This K is constant and this constant is known as potential gradient. So its unit is volt per centimeter or volt per meter. Okay, volt and length unit मीटर. जनरली जब प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो वोल्ट पर सेंटीमीटर में सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, सो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन. पोटेंशियोमीटर वर्क्स at the zero deflection and this is its figure. So first of all we will discuss the ratio of the EMFs of two cell is equals to L1 by L2. This proof. Okay, so let me discuss here. This is the potentiometer. Potentiometer जनरली ऐसा होता है, देखिएगा इस तरीके से बोर्ड में 2 पॉइंट्स होंगे और इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है और ऐसे ही 10 वायर्स लगे होते हैं इस तरीके से. ये कितने वायर हैं? 10 वायर्स हैं. इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर लॉन्ग वायर होगा. और अगर हम कई बार क्वेश्चन ऐसा पुटअप किया जाता है कि अगर इसकी लेंथ को और इंक्रीज कर दिया है, 10 मीटर की जगह 20 मीटर की कर दिया है, तो व्हाट विल हैपन in the potentiometer? So we can say that its sensitivity will rises more and more comparison to before. यानी पहले 10 मीटर था उसके रिस्पेक्ट में अगर ये 20 मीटर कर दिया है तो चेंज क्या होगा? तो इसकी सेंसिटिविटी और बेहतर हो जाएगी. मीन्स बेटर
its sensitivity and we will measure more accurate value of the potential or potential difference. तो अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी और यही हमने इसके प्रिंसिपल में डिस्कस किया। तो अब देखिएगा इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। सो दिस इज potentiometers wires like this, and this is 10-meter long wire whose both ends are A and B. Okay, so now A end attached through the positive terminal of the battery and positive terminal of both cells whose EMFs are E1 and E2. Okay, one is Leclanchi cell and another is Daniel cell, you know, and both cells negative terminal attached through the two-way key. It is a two-way key, okay, and it's one terminal attached through the galvanometer, okay, and this galvanometer attached through the jockey in which two conditions formed N1 and N2, okay, and this negative terminal connected through the rheostat and another one-way key, okay, this is K1 and this is K2 and it's also attached to the positive terminal. So this is the general circuit formula and it's according to this, okay. Finally this is the flow of current. So here the positive terminal of the battery, this is battery, and both the positive terminals of the Leclanchi and Daniel cell attached to the A end of the potentiometer and its both negative terminal attached through the two-way key and another end of this two-way key attached through the galvanometer and galvanometer also attached through the jockey which rubs on this wire which are made by Constantan or nichrome, okay, and its negative terminal of battery attached to the rheostat and one-way key and its another end attached to the B point of the galvanometer. So at the zero deflection whenever cell E1 on and this off, इसका हम plug on करेंगे, लगाएंगे और ये हटा देंगे. So first of all it's a calculation when E1 on and E2 off. So let zero deflection form at L1 length, okay. अब जीरो डिफ्लेक्शन जो L1 लेंथ पर फॉर्म होगी मीन्स ये कह सकते हैं कि A से लेकर N1 पहली कंडीशन मीन्स N1 इक्वल टू L1 लेंथ है, ओके. सो इन दिस वे वी कैन से दैट E1 माइनस फाई L1 इक्वल टू 0. एक ये क्लोज सर्किट यूज करेंगे, E1 और N1 ऐसे होते हुए A पर आएंगे और इस क्लोज सर्किट का नेट EMF 0 होगा. सो E1 इक्वल टू फाई L1. In the same way, now when E2 on and E1 off, in this situation, in this condition, let zero deflection formed at L2 length, means A and 2 equals to L2. In this way E2 माइनस फाई L2 इक्वल टू 0. यहाँ पर हमने फाई
एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेट कर लिया है। जैसे हमने V इक्वल टू KL लेट किया था, तो K को पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पर K और फाई सिमिलर चीजें हैं, तो E2 इक्वल टू फाई L2, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, एंड ratio of the equation first and second, E1 equals to phi L1, E2 equals to phi L2. So equation first divided by equation second. Okay. So in this way, E1 by E2 equals to phi L1 upon phi L2. That means E1 by E2 equals to L1 upon L2. Okay. In this way, we can solve the ratio of the EMFs of two cells is equals to the ratio of their lengths which are formed at the zero deflection. Okay.